ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, वोट चोर, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। आरएसएस के लोग तो पूरी तरीके से आरएसएस में पूरा नीचे से ऊपर तक फौज भरी हुई है। वहां तो महिलाओं का सम्मान ही नहीं है, महिला है ही नहीं है। আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, এটা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। Viewers, what we are witnessing is not clearly politics. This is not debate. It's not even dissent. This is a descent into unvarnished hate that threatens the very idea of India. It's beyond the realm of civility. The opposition, leaders who claim to champion rights, justice and love, have crossed a line. They have actually destroyed the line. Disagree with your political opponents by all means. Debate them, challenge them, defeat them in arguments and polls. But when disagreement turns to abuse, when abuse turns to calls for murder, we are no longer talking about politics. We are talking about poison. Just 2 days ago, viewers, the Congress party stood on a stage and insulted the mother of our Prime Minister. It was the Congress's stage. The Congress party is now trying all the tricks in the books to distance itself, to link the man who gave that abusive rant to the BJP. They've been fact-checked. And who were they abusing? A woman no longer here to defend herself, a mother, a citizen. Her memory was dragged through the mud for cheap political points. And what did you hear from Rahul Gandhi, the self-proclaimed preacher of Mohabbat? Total silence, radio silence, viewers, not a word of remorse, not one word. No whisper of accountability. His silence is a green light. It is a nod to his rank and file to keep pushing this narrative, to keep hating. And see what we have. Ajay Rai, man on your screen, a senior Congress leader, unleashed a tirade of abuse against the RSS and RSS chief Mohan Bhagwat. Words meant to wound and insult. Words that replace ideas with venom. And he did not stop here. Congress's ally and TMC leader Mahua Moitra took it beyond abuse. She called for beheading of Amit Shah. Beheading, viewers, let that sink in. This is a public call for murder by a member of parliament. The TMC says, well, it is symbolic. What is symbolic in asking for someone's head? This is not for fight for power anymore. This is a campaign of hate. This is the hate for votes yatra, now unleashed in Bihar. A yatra not for rights, but for the rage. The opposition's message seems to be clear. If you don't like someone, don't just oppose them, abuse them, slander their family, call for their death. Now think about this. Is this their vision for India, where disagreement means destruction, death? Where a leader's mother is a fair game and a rival's life is a bargaining chip? And this is not about one party or one instance. This is about all of us, our idea of India, about what we allow, what we tolerate, and what we become. Viewers, when calls for violence go unchecked, when hate is met with silence, we all lose. We lose the decency that binds us. We lose the democracy we fought for. We lose the India we love. Is this their plan to defeat Narendra Modi? By abusing his late mother? By attacking the RSS? By calling for Amit Shah's murder? The Congress is unrepentant. Sample the reactions. भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। अजय राय जी ने जो बात बोली है, दैट्स नॉट अनपार्लियामेंट्री। क्योंकि अगर आप हमारी अवधी भाषा को या किसी ऐसी लोकल डायलेक्ट को अनपार्लियामेंट्री करें तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है।
तो सीधी सी बात है, इधर आरएसएस शादी ब्याह नहीं करते हैं। वो ये जो है, वो जो वर्ड जो है, जो वो मीन कर सिंबॉलिक वैसे जो मीन करना चाहते थे वो ठीक से नहीं हुआ, लेकिन उसका कोई इरादा अमित शाह जी को कोई फिजिकली अटैक करने का, हिट करने का वो नहीं था। Let's open this up. Sanju Verma, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Harshvardhan Tripathi ji, Nikhil Jain, Ravi Srivastav, Professor Monojit Mondal, and Dr. Shyam Kumar, the spokesperson of the Rashtriya Janata Dal, will be joining us shortly. Nikhil, why can't Rahul Gandhi condemn what we are all seeing? First of all, Pranesh, let me correct you that you started by saying that the Congress party stood on a stage and abused Prime Minister Modi's deceased mother. It was not the Congress party, it was not a Congress leader, it was not even a Congress worker, it was some idiot, some hoodlum, somebody who stood on the stage, abused the Prime Minister. She shouldn't have had. That's condemnable, that's wrong. Open for hoodlums? And the organizer... Is the Congress stage open for hoodlums? Answer that question, Nikhil. Sorry? Is the Congress stage open for hoodlums? It was not the Congress stage. Tejasvi Yadav, Rahul Gandhi or no other leader from the Congress was even present at the time when this happened. The leaders had already left. Nikhil, it does not take, one minute. It does not take too much to identify a Congress stage. Can you see your party's flags, banner, the hand there in Abhay Mudra that allows this kind of hate? Just look at the pictures. There was an attempt, 1 minute Nikhil, there was an attempt by the Congress party and your ecosystem to link this man to the BJP. You've been fact-checked by your favorite fact-checker. You are not even letting me condemn the fact that some idiot went on a stage and abused the Prime Minister. I condemn the act. It's very wrong. If you can, and why can't Rahul Gandhi condemn this? He made a public apology about it. He apologized Public to the Prime apology? Minister. Now He you were took saying responsibility. it had nothing to do with the Congress party. Now you're talking about the public apology. Make up your mind, Nikhil. Nikhil, look, make up your mind. This is about the larger principle that Rahul Gandhi talks about. Muhabbat ki dukan. What dukan is this? The people will judge. The larger question is, 1 minute, that Ajay Rai, is Ajay Rai from the Congress party? Is Ajay Rai your leader? Let me complete on the first point that you made about this incident that Forget happened the first in Bihar. point. Here's the second point. Is Ajay Rai a Congress leader? No. You can't keep on slinging mud at me and not even allow me to wipe my face. That's not fair. If you raise a point, listen to the response to that. Let me tell your viewers that the organizer of the event apologized to the Prime Minister, condemned the act, told everybody that this person didn't have anything to do with the Congress. He was not a Congress office bearer. He was slapped, the mic was snatched from him. Let your viewers know the truth. Forget this, forget the organizer. Let's focus on what Mr. Pawan Kheda has said. He's senior leader of your party, looks after media, communications, what have you. See what he said. There is defiance in every word. It's dripping out of that post and through his reaction. Now answer the question about Ajay Rai. Nikhil, don't do this, please. There are others who haven't spoken. Please, respect their time. Ajay Rai is a Congress leader. That you can't agree because he was celebrating his imagined victory a few days ago. Do you know what he said about Mohan Bhagwat? I can't repeat those words. Oh. Pranesh, do you know what Adityanath said to an ANI reporter? Should I repeat the word? And there are more letters to follow? Should I say what Nishikant Dubey said about MP Nikhil Jain, Nikhil Jain, get a hold of yourself. Nikhil, get a hold of yourself. You know, don't start blabbering here on national television. Think of what you're going to say, process it, take a printout and then read from it. Because clearly without the printer, you have a problem. Professor Mondal, Mahua Moitra is calling for Amit Shah's head. What kind of laughable argument is this? I mean, the party has made it amply clear that this is just, you're talking about or showing resistance against the Home Minister. Even then, I believe that she should have used those words.
But in politics, look at the way you have been abusing the elected woman chief minister of the state for how many years? Even the person who is sitting on your panel from BJP, look how many times she has abused the Mamata Banerjee, lied about her. You have not even spared the baby boy of Abhishek Banerjee when you had to, his wife had to take him to Delhi for, grilling by the ED, and nothing has happened in this case so far. So you talk about Katsi, BJP is talking about Katsi. I think his devil is advocating for the angel. So we don't want any lecture from BJP as far as political semantics are concerned. Even day before yesterday, I saw on an Hindi channel, one of the spokespersons from BJP Professor in Mondal, Delhi. forget the BJP. The BJP hasn't spoken yet. I am asking you a question on principle. If you accuse the BJP of Gali politics, is that the standard that you want to emulate, follow? Do you ask the same question to BJP when they practice Gali politics day in and day out? Of course, sir. Whenever a leader has crossed the line, I am the first one to ask. Professor Mondal. I am repeating again. On a Hindi channel, I cannot name that. Sir, I can't go on some other channel and ask Professor Mondal. This does not work like this, sir. Please. This is not the India Alliance stage. That one day one leader comes, the other day that leader is abusing someone else. I can only speak on Times Now, sir. I use this platform to speak to viewers. रवि श्रीवास्तव जी, अमित शाह का सर टेबल पे रख दो, इसका क्या मतलब है सर? या कितने मतलब हो सकते हैं, ये बता दीजिए. I think it's a kind of a metaphor, because what happens is that if there is any case of incompetence, like Amit Shah had 109 days of that Pahalgam, and no action has been taken. So what people say normally in such cases, the head should roll. I think it's a metaphor to that. That is, although the words are not appropriate, I condemn it. But I think this is what she meant, that the infiltrators are coming. Okay. They are doing all kind of... You see, if you can condemn, if Nikhil Jain can condemn, why is there total silence from the leader of opposition, Rahul Gandhi ji? अभय मुद्रा की तो बात वही करते हैं. ये कौन सा मुद्रा है? अब्यूज मुद्रा, मर्डर मुद्रा. What mudra is this? What Rahul Gandhi did wrong? What he did? Tell me. What wrong he did? Why is Rahul Gandhi not condemning this kind of commentary? Why should he? Did he abuse? Okay. Why should he? Why should Rahul Gandhi? You will never ask. Right. Rahul Gandhi can abuse the Prime Minister by calling him vote chore and exhorting the people to repeat his slogans, but you don't see that as provocation. It's par for the course. Sanju Verma, respond to what you've heard. I'll take it one by one. First, let me respond to the TMC, since he made a direct, accusation and allegation at me saying BJP spokesperson has used foul language. I have been on a zillion debates with Manojit Mandal. I have called out Mamata Banerjee's incompetence in the Arjikar case, saying she's failed as the chief minister, failed as the home minister, failed as the, health minister. I have called out Mamata Banerjee's incompetence with respect to the law college rape. Have I abused Mamata Banerjee? Personally, no. But what did Mamata Banerjee do after the Hansa Khani gang rape of a 14-year-old? She laughed, saying, "Eta rape chilo, na eta love affair chilo, na meta pregnant chilo." So don't sit here and give bhashan to the BJP. Now let me say this to the Congress. Rahul Gandhi said, "ये जो नरेंद्र मोदी है ना, ये जब 2024 का चुनाव हार जाएगा ना," this is before the 2024 election results were out, जो देश की युवा जनता है ना, ये रोड पर निकलकर नरेंद्र मोदी को डंडे मारेगी, नरेंद्र मोदी की डंडों से पिटाई होगी. This is the abusive, this is the shameful, this is the disgusting, this is the disgraceful language of Rahul Gandhi, who's today being idolized as leader of the opposition. इमरान मसूद मोदी की बोटी बोटी काट देंगे. इनको तो पहले यूथ कांग्रेस का करता धरता बनाया गया, and then he was given a ticket and is now the Lok Sabha MP from Saharanpur. Then let's not forget Jairam Ramesh, who's today
second or third in command after Khadge. He called Modi Duryodhan. Sonia Gandhi called Modi Maut ka Saudagar. Adhir Ranjan Chaudhary called Modi Gandhi Nali. And then you have Mallikarjun Kharge who called Modi Ravan. But look at Kanhaiya Kumar, सबसे बदतमीज आदमी, who still has a case pending against him for flashing himself at a JNU woman in 2016. ये क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में? नरेंद्र मोदी नालायक हैं. नरेंद्र मोदी सिर्फ संघी नहीं, आतंकवादी हैं. Shame on कन्हैया कुमार. मैं कहती हूँ मोहम्मद रिजवी abused Narendra Modi's mother. Rahul Gandhi has an opinion on everything under the sun, Pranesh. क्या राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की माता श्री का जो अपमान हुआ है वो आज जिंदा भी नहीं है? क्या राहुल गांधी ने इसका खंडन किया नहीं? क्या प्रियंका वाड्रा ने खंडन किया नहीं? क्या सोनिया गांधी ने खंडन किया नहीं? क्या मल्लिकार्जुन ने खड़गे ने खंडन किया नहीं? क्या जयराम रमेश ने खंडन किया नहीं? और यहाँ बैठकर कांग्रेस पार्टी के अनऑफिशियल नुमाइंदे, आई एम श्योर निखिल जैन इज ऑलरेडी मेकिंग पॉइंटर्स. वो बोलेंगे and I am telling you what he will say. Nikhil, you don't have to show me those papers. I know what you will say. Why are you even putting in that effort? I know what you will say. I am saying it before you. You will say Prime Minister Modi said this about Sonia Gandhi. Sonia Gandhi is in public life. She is in politics. She can answer for herself. Prime Minister Modi's late mother is not. And even when she was alive, she was not in politics. She has nothing to do with it. So that equivalence does not hold. Now, one placard you can't discard. Now come up with another argument. Till then, listen to हर्षवर्धन जी. हर्षवर्धन जी ये बोल रहे हैं राहुल गांधी ने क्या किया है, वो क्यों इस पे कुछ टिप्पणी करें? उन्होंने तो ना गाली दी, ना वो स्टेज पे थे. तो राहुल गांधी की क्या गलती अगर मोदी के माता को किसी ने गाली दिया है? प्रणय जी, बहुत एकदम तय डिजाइन के आधार पर ये सब कुछ हो रहा है. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में देश में राहुल गांधी ने जो बताया था ना कि केरोसिन छिड़क दिया गया है, बस माचिस लगाने की देर है. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने आतंकवादियों को देखा, आतंकवादियों ने मुझे देखा. अब आतंकवादी उनको देखते हैं, वो आतंकवादी को देखते हैं, ये भी कमाल है. राहुल गांधी ने कहा कि ये आदमी निकलेगा सड़क पर, इसको चौराहे पर लोग डंडे से मारेंगे. नरेंद्र मोदी के लिए कहा. अभी ताजा बयान है कि वो उसको फोन किया, उसको कहा और वो सरेंडर कर गया. ये अभी ट्रंप को लेकर कहा. बनारस में नरेंद्र मोदी के काफिले पर किसी ने एक चप्पल उछाल दी. नेताओं का विरोध होता है, कई लोग पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, बहुत कुछ करते हैं. कहा मैंने सब खत्म कर दिया, ध्वस्त हो गया नरेंद्र मोदी. 240 पर आई तो कहे देश की जनता ने सबक सिखा दिया, ये होती है डेमोक्रेसी, ये होता है लोकतंत्र. अभी क्या कहा मैंने नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास फाड़ दिया है. अब ये सिर्फ मीडिया का क्रिएशन है, सिर्फ मीडिया ने नरेंद्र मोदी को बड़ा बना रखा है. और अभी क्या कह रहे हैं? अभी वो कह रहे हैं वोट चोरी हो रही. यानी जिस जनता ने उनको 52 से 99 पर पहुंचा दिया, नरेंद्र मोदी को 303 से 240 पर पहुंचा दिया, उसको कह रहे हैं कि वोट चोर. बिहार की जनता को यह बर्दाश्त नहीं होगा. और जिस तरह से लोगों के दिमाग में जहर भर रहे हैं, उनकी पार्टी के समर्थकों को लग रहा है कि अगर हमारा नेता राहुल गांधी इस तरह की स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, उन्होंने गाली दे दी. वो उनकी इतनी ही समझ है, उन्होंने गाली दे दी. ये जहर राहुल गांधी ने राहुल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में डाला है. मैं फिर से कह रहा हूं, ये राहुल कांग्रेस है जहां पूरी तरह से हर मर्यादा, हर स्तर को गिरा दिया गया है. और अगर ये सब नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी. आप कहते कि वो तो बहक गया था, वो तो नॉनसेंस है, वो तो स्टूपिड है, बेवकूफ है. क्या राहुल गांधी ने माफी मांगी? नहीं मांगी. निखिल जैन कुछ नहीं है प्रणेश कांग्रेस पार्टी में. निखिल की बात को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है. निखिल ठीक है, टीवी पर डिबेट के लिए एक अच्छा है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आएगा ना. पवन खेड़ा बचाव कर रहे हैं. मैं ये तो निखिल जैन की बात मैं समझ गया, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अजय राय तो कुछ है कांग्रेस पार्टी में? नहीं, मैं वही कह रहा हूं. निखिल वो पवन खेड़ा ने उसको सपोर्ट किया अलग तरह से. सुप्रिया श्रीनेत की पूरी टीम झूठ फैला रही है. जो कांग्रेस के सपोर्टर आईटी सोशल मीडिया आईटी सेल के दिखते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं. और आपने सही कहा कि उनको उसी फैक्ट चेकर ने कर दिया जो अक्सर दूसरे तरह के फैक्ट करता है. ये सब हो क्यों रहा है? इसका मतलब ये कि राहुल कांग्रेस ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी को गाली दी जाती रहे,
एक क्यास बनता रहे, और जो कई बार कहा जाता है ढाका मॉडल, वो ढाका मॉडल यहां करने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए कई बार कहा जाता है ना कि ऐसे में ही तो अमेरिकी डीप स्टेट काम कर पाता है। श्याम कुमार जी, ये आप लोग भी वहां पे बाइक पे बैठ के अधिकार यात्रा कर रहे हैं, और जब वहां पे गाली दिया जा रहा है प्रधानमंत्री के माता जी को, तब आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जवाब देगी। ये कौन सा अधिकार यात्रा है सर? और वो आपके अलायंस पार्टनर टीएमसी वो कह रहे हैं कि अमित शाह का सर टेबल पे रख दो। प्रनेश जी देखिए, हम लोग इस तरह किसी तरह भाषा को या मतलब लैंग्वेज को या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज व्हाटएवर हम सपोर्ट नहीं करते। एक बात क्लियर कर दो, जो पब्लिक मॉरल्स, पब्लिक वैल्यूज हमारे लिए बड़ा एक प्राथमिकता है, ये आपको बताना चाहते हैं। जहाँ तक रही वैल्यूज की बात, जहाँ तक रही पॉलिटिकल लैंग्वेज की बात, तो आपने देखा ना कि 10 वर्षों में किस तरह का जो है राहुल गांधी को पप्पू घोषणा करने क्या क्या कोशिशें किस पार्टी ने की है, आप जानकारी है ना आपको, कि बताने की जरूरत है। उनके डिग्निटी पर लीडर ऑफ अपोजिशन इतने बड़े लीडर हैं। श्याम को आपको पता है राहुल गांधी ने आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उस पर खुद क्या बोला है? आपको पता है उन्होंने क्या कहा? नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूं। वो आप देख लीजिएगा, मैं उसको अभी दोहराना नहीं चाहता हूं, आप एक बार देख लीजिएगा। बट आप ये बताइए, ये कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। आप नरेंद्र मोदी को आप पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, जो भी पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स के अंदर आता है, वो जो लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है उसमें जो बोलना है बोलिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूं, देखिए, अगर कोई बोले आपके पार्टी और नेता के बारे में चारा चोर, तो उसमें ऑफेंस लेने की कोई बात नहीं है। चारा घोटाला हुआ, उसमें सजा हुई, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके परिवार का पॉलिटिक्स में नहीं है, उसको अगर कोई कुछ बोले तो वो गलत बात है। वो गलत है, सुन लीजिए, वो मेरी बात आप टेक ऑन ले लीजिए। आप किसी के मतलब कि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना, ये बहुत गलत बात है। ये बात आप जान लीजिए, किसी पर भी किसी पर भी जब टीका टिप्पणी है तो ये इसको बोलिए ना, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो बाइक पे 2 नेता घूम रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं कि मोदी वोट चोर, गद्दी छोड़, जब आप लोगों को ऐसे उकसाएंगे, प्रवोक करेंगे, तो यही होगा। निखिल, Ajay Rai, is he a Congress leader? Will he clarify, apologize? Will the Congress take action against him? Forget what happened in Bihar for a moment. You answer about Ajay Rai. Yes, I will just answer on that. Pranesh, I think you've been sitting in AC studios far too long to understand the language on the street. The word used means a bachelor or a widowed man. It is not an abuse. Nikhil, do not 1 minute. use the first. Nikhil, listen. First of all, I'm telling you again, mind your language when you come on national television, please. And this is not about AC or non-AC studios. Plus, I was not born with a silver spoon like your leader was. So don't tell, 1 minute, don't tell me the man who's done his, spent his political career in AC rooms and beyond. You should not tell me. Don't blame the anchor. 1 minute. You have to convince the people. The people are very clearly upset with the Congress. Otherwise, you would not be in double digits. And this is the 3rd time you're stuck in double digits. Answer the question about Ajay Rai. And don't justify abuse here. I will not allow you to. It's not an abuse, and please also, you don't justify this abuse. Okay. What did Adityanath say to an ANI reporter? What did Nishikant Dubey say to a lady member of parliament? Nikhil Jain. What did Ramesh Biduri? Okay. Now here's the question. 1 minute. If you think the language that Ajay Rai used, 1 minute, if you think the language that Ajay Rai used, ये बहुत ही important question है हर्षवर्धन जी। मैं चाहता हूं कि आप, अगर मैं कुछ बोलने में गलती करूं तो आप उसकी सुधार इमीडिएटली कर दें। निखिल, अगर आपको लगता है अजय राय ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो पार्लियामेंट्री है, तो आप बोल दीजिए राहुल गांधी के लिए वो शब्द। मोदी टू अपोलोजाइज, आप बोल दीजिए राहुल गांधी के लिए वो शब्द। If you think the language, the word used by Ajay Rai is parliamentary, use that word to describe Rahul Gandhi. Can you do it? BJP Nikhil, can you do it? For the filthy language that they've used for women.
No, 1 minute. Would you ask them? No, answer this question. You began by justifying what Ajay Rai said. Now answer this. Use the same word to describe Rahul Gandhi. Can you do it? Answer my question. Will you ask the Prime Minister to Nikhil apologize? Jain, will you for use calling the word to describe Rahul Gandhi, the word that Ajay Rai used for RSS and RSS chief? apologize for calling a woman a 50 crore ki girl? Now you are scared. हर्षवर्धन जी, क्या हो गया? निखिल जैन को अभी समझा रहे थे, इसका मतलब ये होता है? नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अभी जब इस शो की शुरुआत हुई तो एक समाजवादी पार्टी के नेता ने भी कहा कि अवध की ये भाषा है। पता नहीं इनको कुछ पता है या नहीं है। मैं भी अवध का ही हूं, मैं भी अवध का ही रहने वाला हूं। ऐसी भाषा कहते हैं क्या? फिर आप क्या कहेंगे? कोई पुरुष अगर किसी का विवाह नहीं हुआ है तो उनको इन शब्दों में कहेंगे, और अगर इन शब्दों में कहेंगे तो क्या आपने ठीक सवाल किया, क्या अजय राय भूल गए कि किस पार्टी में हो, उनके पार्टी के हाईकमांड कौन है? और अगर इन शब्दों में कहेंगे किसी स्त्री का सुहाग नहीं रहता तो उसको विधवा कहते हैं ना, लेकिन क्या उसको दूसरी भाषा में कहेंगे? शर्म नहीं आती उसको नेशनल टेलीविजन पर बोलते हुए? जुबान इनकी जली नहीं, कटी नहीं जुबान। कमाल है, एक आदमी कोई बदतमीजी करे, वो नीचे गिर जाए, स्तरहीन हो जाए, और उसको नेशनल टेलीविजन पर आप जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो भाषा है। ऐसी कोई भाषा नहीं है। और मैं भाषा अगर है तो फिर राहुल गांधी के लिए भी बोल दीजिए। संजू वर्मा, आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन कि आप लोगों ने राहुल गांधी को पप्पू कहा, अब नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था पप्पू, उसको आपने कांग्रेस का चीफ बना दिया पंजाब में, वो अलग बात है। बट हाउ वुड यू रेस्पॉन्ड टू देयर चार्ज that you keep abusing Rahul Gandhi? You know, Pranesh, we are more than 26 minutes into your debate. You are somebody who's so frank and outspoken, but आपने भी जो आज शब्द अजय राय ने यूज किया, you've not used it. And Nikhil Jain brazenly uses those words. And जैसे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा, क्या जुबान पर थोड़ा लगाम नहीं दे सकते? You're using this on a widely watched show. It shows what you must be doing within the close confines of the walls of your house. But I don't want to get into that. Let's forget about everything else. मैं कहती हूँ चलो एक बार मान लिया जाए that politics has become extremely fractious. Leaders are abusing each other. But किसी की माताश्री जो दुनिया में नहीं रही, आपने उन पर लांछन लगाया। February 17th, 2023 क्या हुआ था प्रणेश? The date was February 17th, 2023. The man was Pawan Khera, who's swashbuckling around as if, you know, कांग्रेस को यही चलाते हैं. He called Narendra Damodar Das Modi as Narendra Gautam Das Modi, taking a jibe at Prime Minister Modi's father, who actually died way back in 1986. You know, today it's more than 39 years since he's dead, but the Congress fails to give basic dignity even to the dead. Very quickly, without being verbose in 10 seconds. April 2019, Rahul Gandhi. ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? May 2023, at Georgetown University, he calls Narendra Modi, the sitting Prime Minister of India, a specimen, a namuna. June 2024, he says Narendra surrender. July 2025, he says ये मोदी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मीडिया का क्रिएटेड एक बलून, एक हवा है. And let's not forget that all through 2019 elections and prior to that, he kept saying चौकीदार चोर है. सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला भाषा पर लगाम दो. Finally, Meenakshi Lekhi had to file a contempt of court case against Rahul Gandhi. तब जाके राहुल गांधी की बदजुबानी पर लगाम लगाया गया. तो मेरा सिर्फ ये कहना है, for everybody out there who's giving भाषण, बीजेपी के प्रवक्ता ऐसे बोलते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता वैसे बोलते हैं, यही ममता बनर्जी है who called JP नड्डा अड्डा बड्डा चड्डा मड्डा गड्ढा पड्डा. ये बहुत सही है, पर आपको दीदी और दीदी से परहेज नहीं, बट निखिल जैन, देखिए निखिल जैन ने अभी भी वो पॉइंट नहीं समझा. हर्षवर्धन जी ने समझा दिया. मुझे तो खैर मानते ही नहीं है कुछ. निखिल, दिस इज नॉट अ न्यूज़पेपर डिबेट. यू कैन स्पीक. लिखने से नहीं होगा. When you keep on putting down my faders all the time, when you will not respond to my questions, Nikhil, if you start abusing, I will have to do that. Please, we are a responsible broadcaster. Pranesh, the word I used because you seem to find it objectionable, I'm not going to use it again, but that is a word of local dialect. That's not a slur, number one. Number two, the words I've not been able to use are the words used by Ramesh Biduri, BJP member of parliament, by Adityanath, the chief minister of Uttar Pradesh. No, 1 minute. Biduri, on the Biduri issue, Nikhil, you've said this in the past also. 1 minute.
Rajnath Singh apologized in parliament. Rajnath Singh. The BJP could have said Rajnath Singh has nothing to do. Biduri said Biduri was show caused. One minute. Here you are justifying what Ajay Rai said. And now you're saying I am not going to repeat it. Will you use the same word to describe Rahul Gandhi? You can't. Nikhil, I'm telling you, you can't. If you can, after the show ends, put out a tweet. Use that word for Rahul Gandhi. Let's see what happens. Ravi Srivastava ji, ये अब हम ऐसे बोलेंगे, अगर हम हरा नहीं पा रहे हैं अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को, तो बोलेंगे किसी का सर लाके रख दो. I will put another word. The word has been said by none other than Suvendu Adhikari, the leader of opposition in the West Bengal Assembly. He has used for Rahul Gandhi that word, and that word I will definitely tweet after this debate. Ravi Because Srivastava ji, BJP 1 minute. spokesperson- So are you now then admitting that the Congress is following the BJP model? फिर where is the high moral ground? अभय मुद्रा मोहब्बत की राजनीति. अगर आप बीजेपी के कुछ गलत कामों को फॉलो करेंगे, तो फिर आप उनको क्या सीख देंगे? The word you said, Suvendu Adhikari, word should be condemned. The kind of word he has used. Yeah, for let's Rahul condemn Gandhi. the word, condemn the neta who's used it. But that can't be. 1 minute. रवि श्रीवास्तव जी, आप गुस्सा क्यों हो रहे? जिस पे गुस्सा होना उस पे हो नहीं रहे. आप अजय राय के लिए कुछ बोलिए. निखिल जैन जस्टिफाइड कर रहे हैं. आप निखिल के सीनियर हैं, हमारे सबके सीनियर है सर. आप उनको समझाना चाहिए आपको. 1 minute. जो I mean, imagine people who are watching this broadcast right now in their drawing rooms, उनको क्या लग रहा होगा? That it's okay to abuse. It's okay to call for someone's head. Beheading. Come from Lucknow only. I know Awadh very well. I know that how people speak over there. The word is filthy. I'm using the word. There you I'm go. saying But it's a Nikhil filthy Jain word. thinks it's okay. Professor Mondal, what is this symbolic defense? It was a metaphor. Tomorrow someone will say Sartan se juda was also symbolic. वो हो गया defense, कोई problem ही नहीं है. The BJP spokesperson asked her, why did she call Mamta Di Kim Jong? Why Shubhendu Adhikari every other day call Mamta Di Chorede Rani, Queen of Thieves? These are all good words. What are you talking about? When it comes to politics, आप सब नंगे हो इस हमाम में भाई, सब. What are you doing? That you have to change the discourse of politics. So how will we change the discourse? By raising the bar like this, by abusing someone's dead mother, and by calling for murder of your political opponents. Let's leave it at this.